Hello students, we are continuing this lecture that is computer software and hardware. We discussed about the types of software, system software and application software, the brief introduction. Then we discussed about the various system utilities. Now we are discussing today is that is the operating system. Now, what is an operating system? Operating system is an interface between the computer software and the user of a computer and computer hardware. User और hardware के बीच में एक layer होती है that is called your operating system. It controls all kind of programs. So एक user है, how it will interact. मतलब आपको कोई भी data अगर लेना है that is stored in your hardware या किस hard disk में आपकी stored है, then how will you reach to that particular data? So for that thing you need the operating system. So user and hardware के बीच में एक interface है, एक layer है, that is your operating system. Now these are the examples of various operating systems available. So that is Windows XP, Windows 2000, Vista, now Windows 7. Now the latest version is Windows 10, Linux, Unix. These are all the operating system. Then these are also another examples like Linux, Unix, Ubuntu, Mac OS, BlackBerry, Android. Some are mobile OS, then Apple iOS. Some are laptop or you can say desktop iOS, and some are used in phones, mobile phones, operating system. Now, what are the various functions that are performed by the operating system? Memory management, processor management, device management, file management, security, control over system performance, job accounting, error detecting aids, coordination between other software and users. So we will see one by one, and it is very clear from the name itself. Just we need to understand what are the things in this they are doing. Memory means it is managing the memory, but how it is managing the memory? Now we know that memory management means the management of primary memory, means main memory, that is RAM or ROM. तो क्या क्या एक्टिविटी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी कि कौन से प्रोग्राम what part of it are used by whom and what part is not in used. RAM में अगर 4 प्रोसेसेस चल रही हैं तो उसमें से कितना पार्ट किसने यूज किया है एंड कितना पार्ट अभी अनयूज्ड है, कितनी और हम उसमें प्रोग्राम्स रन करा सकते हैं. In multi-programming, the OS decides which process will get memory, when and how much. Now, if you want to run number of programs at a time, so at that time, all the processors want to get memory. So it is the OS who decides that which process will get how much memory and when and at what time it needs memory and how much memory is needed by that particular process. And allocation of memory, whenever a process requesting for the memory, that time allocation, and when the memory is no longer required, then deallocation. So it is keeping track of all the primary memory, means primary memory में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, which process is requesting how much memory is required, and allocation and deallocation of memory. Allocation when the process request, and deallocation means when the process is no longer required, that needs no memory or it has been terminated. So the managing the entire memory part is your memory management. Now processor management. Any process request to run will not get the CPU at a time. So who decides that which particular process should be run at first? So this function is done by operating system. It decides that which process gets the process कितने टाइम के. मेमोरी मैनेजमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी मिलेगी एंड कितने टाइम के लिए मिलेगी. इन प्रोसेसर मींस कि उसको हम रन कराने की परमिशन दे रहे हैं. लाइक प्रोसेसर गेट्स द प्रोसेसर, मतलब सीपीयू में उसको स्पेस मिल गया है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए मिला है, दैट इज कॉल्ड योर प्रोसेस शेड्यूलिंग. व्हाट विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेस व्हेन, कब मिलेगी और कितने टाइम के लिए मिलेगी.
ठीक है, तो व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज हियर इज फर्स्ट इज शेड्यूलिंग, कि किस प्रोसेस को कितना टाइम मिलेगा और कब मिलेगा, प्लस कीप ट्रैक्स ऑफ कि प्रोसेस के पास कितनी मेमोरी है और प्रोसेस का क्या स्टेटस है, कितनी एग्जीक्यूट हो गई है, वेदर इट इज इन द बिगनिंग, मिड और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस. So the program, this process management is responsible for the traffic controller. इस तरह से प्रोग्राम रन कराने हैं कि हमारा ट्रैफिक ना हो. ट्रैफिक मींस रोड ट्रैफिक नहीं, प्रोसेसेस का ट्रैफिक. इट एलोकेट्स द प्रोसेसर, किसी भी प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट करना और डी एलोकेट करना जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. मेमोरी मैनेजमेंट में भी एलोकेशन और डी एलोकेशन था, बट एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी. यहाँ क्या हो रहा है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर. नाउ ड्राइवर मैनेजमेंट. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेजेस द डिवाइसेस कम्युनिकेशन वाया देयर रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स. ठीक है, इट कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल द डिवाइसेस. द प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर. Decides which process gets the device when and for how much time. Allocates the device in the most efficient way and deallocates devices. In the similar manner, जैसे हमने बोला कि मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेसर मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को मेमोरी प्रोवाइड करता था, एलोकेट करता है एंड देन डी एलोकेट करता है. इन द सिमिलर वे प्रोसेसर एलोकेट करता है एंड डी एलोकेट करता है. ड्राइवर मैनेजमेंट में क्या है कि एक सिस्टम को किस पर्टिकुलर डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, मान लो कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम में प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है या फोटोस्टेट मशीन की जो रिक्वायरमेंट है, तो किस पर्टिकुलर सिस्टम को या प्रोसेस को उस टाइम पर किस डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड ड्राइवर्स. तो ये सब डिसाइड करना किसका काम है, एलोकेशन ऑफ डिवाइस एंड डी एलोकेशन ऑफ डिवाइस when it is no longer needed. So this comes under your driver management. Now file management, this we have already discussed कि फाइल को क्रिएट करना है, डिलीट करना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फोल्डर्स क्रिएट करने, डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है, and how your files are organized into the directories. So all these things are coming under the functions of operating system. These are some other activities. The main activities I have already discussed. Security, this we know, and the name itself is depicting the function. Security means only the authorized people were allowed to access the data, and how they will be allowed, using the login ID and password. Whenever you are opening the Gmail, the first page it will ask for your email ID or your password. When it is correct, then only you are able to access that particular data. In the similar way, it prevents the unauthorized access to the program or data. Then control over system performance. It records the delay. There are two processes, so it records the delay between the request for a service and the response time. So it manages the control. Now job accounting. Job accounting means it keeps tracks of all the time and resources used by various jobs and users. Which particular user is using how many resources and for how much time. In the similar way, what are the various jobs that are being there, and what are the time, how much time they have taken, and what are the resources they have used. All these things will come under job accounting. Error detecting acts means production of traces, errors, messages, and other debugging, and it's take care of all the errors and how those errors can be detected and how can be corrected. Coordination between other software and users. Coordination and assignment of compiler, interpreter, and assembler and other software to vary other users of the computer system. So on and all, what it is doing, 3-4 tasks are the main important one. First one is the allocation and deallocation of memory, that is memory management. Now which particular process should be run, किसको run होना चाहिए, allocation and deallocation of process to the processor. Processor को process allocate हो जाएगी for how much time and for and when, कब मिलेगी और कितने टाइम के लिए मिलेगी, that is allocation and deallocation of processor. देन हमने बात किया फाइल मैनेजमेंट की.
कैसे फाइल क्रिएट होगी, कैसे मैनेज होगी, कैसे डिलीट होगी, कट, कॉपी, पेस्ट एंड ऑल. Then we talked about the driver management. किस पर्टिकुलर सिस्टम को और किस पर्टिकुलर यूजर को कौन से डिवाइस चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए. These are the main functions. Security, these are all other things. So main things I have discussed. So this is all about the functions of operating system and what exactly the operating system is. It is acting as an interface between the user and the hardware so that it can interact with the hardware and things can go smoothly. So this is all about the operating system. Thank you.